Hello students, today we will be discuss about spherical lenses and a definition related to spherical lenses. Okay, so let us start now with spherical lenses. Spherical lenses, a transparent medium bounded by two spherical surfaces is called spherical lenses. Okay, a transparent medium bounded by two spherical surfaces is called are called spherical lenses. Okay, there are of two types. There are of two types. Let us consider this is a hollow sphere of glass, hollow sphere of glass. There is another hollow sphere of glass. ये दोनों ही hollow sphere of glass हैं. अगर हम यहाँ से इसके दो पार्ट इस तरह से कट करें, यहाँ से इस तरह, ये तो ये एक स्फेरिकल लेंस बन जाएगा, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाई टू spherical surface. This is a spherical surface of first hollow sphere of glass and this is a spherical surface of second sphere of glass. Okay, तो इसको हम बोलेंगे concave lens oblique diverging lens. This is a concave lens oblique diverging lens. Okay, if we takes दिस स्फेरिकल सरफेस, अगर हम इन दोनों सरफेसेस को इस तरह लेते हैं, यहां से कट करते हैं इस तरह, तो यहां पे एक दूसरा स्फेरिकल लेंस बन जाएगा. ये दिस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑब्लिक कन्वर्जिंग लेंस. Converging lens. Spherical lens are of two types in your syllabus. Okay, concave and convex. Concave is called diverging lens and convex is called converging lens. Okay, ये आप अच्छे से नोट करिए. इसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन रिलेटेड टू spherical lenses. Definition related to spherical lenses. First is pole. पोल को हम पी से डिनोट करते हैं. ये दिस इज अ
concave lens oblique diverging lens, and there is another is called convex lens oblique converging lens. The midpoint of spherical surface, ये वाला, the midpoint of spherical surface is called pole. इसके पोल अपोजिट होंगे, P1 इधर होगा और P2 इधर होगा, बिकॉज ये वाला में ये वाला स्फेरिकल लेंस कुछ इस तरह से बनता है, इसका फर्स्ट वाला होलो स्फेयर ऑफ ग्लास इस तरफ है तो इसका पोल P1 इधर, सेकेंड वाला इस तरफ है तो इसका P2 इस तरफ. बट इसमें क्या होता है, इस तरह से बनाते हैं हम इसको, फर्स्ट स्फेयर इधर है तो पोल 1 इधर होगा इस वाले का, और सेकेंड स्फेयर ये वाला है तो इसका वाला पार्ट इस तरफ लगा हुआ है तो पोल 2 इस तरफ होगा. वट द मिड पॉइंट ऑफ spherical surface is called pole. It is denoted by P. Next is center of curvature. Center of curvature. The center of hollow sphere of glass is called center of curvature for lenses. This is concave lens, ये pole 1, pole 2, center of curvature 1 and center of curvature 2, C1 and C2. For convex lens, this is our convex lens, pole 1, pole 2, what center of curvature C1 and center of curvature C2. Center of curvature C1 is left to the lens and center of curvature C2 is right to lens. ओके, इस तरह से ये जो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास हैं इनके जो सेंटर हैं वो इन लेंसेज के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. ओके, इनको हम C से डिनोट करते हैं. अगर फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हम C1 मान लेंगे, सेकेंड है तो C2 मान लेंगे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस. Principal axis, a line passing through centers of curvature. A line passing through centers of curvature. ये जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है इनको बोलेंगे, सॉरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां से जो पास होने वाली लाइन है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. This is principal axis. Okay. Fourth is optical center. This optical center. This is a convex lens. Principal axis, incident ray, this is refracted ray and this is emergent ray. Okay, incident ray after refraction, this is refracted ray, and refracted ray intersect to the principal axis at any point inside the lens is called optical center. ये होता है हमारा optical center और ये होता है normal. Similarly, this is a diverging lens. Principal axis, if incident ray this is refracted ray and this is emergent ray.
refracted ray intersect to principal axis at any point inside the lens is called optical center. ये होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलेंगे नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल. ओके, इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2. पोल 1 पोल 2, इधर पोल 1 पोल 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2. ओके, अगला हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसे अच्छे से नोट करिए, फिर बात करते हैं. Radius of curvature. This is convex lens, normal, principal axis, optical center. Oh, this is pole 1 and pole 2. Center of curvature C1, center of curvature C2. It means center of curvature first and center of curvature second. And there is another, this is concave oblique diverging lens. This is normal, principal axis, optical center, pole 1, pole 2, center of curvature 1, center of curvature 2. The distance from optical center to center of curvature is called radius of curvature. Distance from optical center to center of curvature. Distance from optical center to center of curvature is called radius of curvature. It is denoted by capital R and its unit is centimeter. यहाँ पे लिखेंगे R for radius of curvature in centimeter. इसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर में. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए अलग अलग होंगे. ओके, बट दोनों में दो दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दो प्रिंसिपल फोकस भी होंगे. तो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं फॉर कॉनकेव लेंस. ए पार्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. This is concave lens, normal, principal axis, optical center, pole 1, pole 2, center of curvature 1, center of curvature 2. If incident ray of light, this is incident ray of light. What these are incident rays of light. Incident rays of light parallel to principal axis after reflection appear to divert from a point on principal axis. It's called first principal focus. It is denoted by F1. Okay. Incident rays of light parallel to principal axis after refraction appear to divert from a point on principal axis is called first principal focus.
Second, this is concave lens oblique converging lens, and this is normal, principal axis, optical center, pole 1, pole 2, center of curvature 1, principal focus first. Okay. Incident rays of light, fall on a point on principal axis after refraction पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से, इट्स कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. ये इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, C2. इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस. कॉन्केव. ओके. अब हम पढ़ते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस. B, for convex lens, first focus, first principal focus. This is a convex lens. This is normal, principal axis, optical center, pole 1, pole 2, center of curvature 1, center of curvature 2. Incident rays of light coming from a point on principal axis, इस तरह से, after refraction पैरेलल टू, ये पैरेलल होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, is called first principal focus F1. Incident rays of light coming from a point on principal axis after refraction parallel to principal axis, this point is called first principal focus. And second principal focus लिखें या focus, सेम बात है. ओके. This is convex lens, normal, principal axis, optical center, pole 1, pole 2, center of curvature 1, principal focus 1. This is center of curvature 2. Incident rays of light parallel to principal axis after refraction intersect to each other. Intersect to each other at any point on principal axis, and this point is called second principal focus for convex lens. Okay. इससे आप अच्छे से नोट कर लिया करें. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके कर लें, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट, फोकल लेंथ. This is concave oblique diverging lens. Normal, principal axis, optical center, P1, P2. Center of curvature 1, center of curvature 2.
focus 1, focus 2. Distance from optical center to principal focus. Distance from optical center to principal focus. ये भी ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी फोकस है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज convex lens, this is normal. Principal axis, optical center, pole 1, pole 2, center of curvature 1, principal focus 1. इधर है center of curvature 2 and focus 2, means second center of curvature and second principal focus. और इधर बोलेंगे first center of curvature and first principal focus. Distance from optical center to principal focus. Distance from optical center to principal focus is called focal length. Focal length is denoted by F. F is focal length, जिसको हम focus length भी बोलते हैं, and its unit is centimeter. Okay? आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक्स.